2 पार्टिसिपेंट हैं, so I can say कि virtual world का advantage definitely we are using. Yeah, absolutely right. Absolutely. So this is 4 days program, right? Yes, right. Okay. Good afternoon Deepak ji. Good afternoon everyone. I hope अभी सभी का mute है, and in the last we will allow to unmute everyone so that if you have any queries you can ask. मंगला जी नमस्कार. सुनील सर. Arun ji, can you unmute for 2-3 minutes? Yes. Our admin panel to unmute 2-3 minutes. Sunil Mangla ji or everyone? Everyone कर दीजिए. When we will start. Now every participant can unmute and talk. नमस्कार सुमित जी. सभी स्पीकर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सुनील जी. नमस्कार एवरीवन. मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ. मैं 10 मिनट में पहुंचूंगा ऑफिस में. मैं अभी से चालू नो प्रॉब्लम एट ऑल सर. आपको सुनना है सर, कहीं से भी सुन सकते हैं. दिस इज द वर्चुअल वर्ल्ड वेयर वी कैन गेट द बेनिफिट. बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है सुमित जी. आप तो हमेशा से ही पूरा कोरोना काल आपने ऐसे ही निकाला है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. आपने जितना टाइम इसको प्रोफेशन को दिया है सर, रियली बहुत बढ़िया आपने किया है सर. थैंक यू सुनील सर. थैंक यू. आपका सर मोटिवेशन हमें प्रेरित करता है कि हम और कुछ जो टॉपिक को एनालाइज कर सकें. और आज इस जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स में भी हमने रिफ्रेशर कोर्स में ये सोचा था कि प्रैक्टिकल हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको रिफ्रेश करने की जरूरत है. यही सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया और एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया. इसमें सर थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन ये देना, जो ये QRmp वाला जो मोड है ना, इसमें जो टैक्स जमा कराना है, जैसे अभी दिसंबर का अब तो हम 35% फिक्स मेथड पे तो हम आ नहीं सकते. हम तो नेक्स्ट क्वार्टर में आएंगे फिक्स मेथड में. जी. तो उसमें बंदा दोनों. अरुण जी ने इस पे स्पेसिफिक पीपीटी भी डिजाइन की हुई है. एंड फिर भी अगर क्वेरी रहती है तो इन द लास्ट वी विल अलाउ चैट, ऑनलाइन चैट, सो दैट हमारा सर पर्पस ही यही है कि सारी लोगों की क्वेरी 1-to-1 एंड एंटायर टॉपिक मस्ट बी क्लियर, तभी बेनिफिट है. रस्तोगी जी नमस्कार. माय सीनियर फ्रेंड आके रस्तोगी जी इज हियर. अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं राजेश कुमार जी. अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. हाँ, अनम्यूट भी कर सकते हैं आप अपने आप को. हमने अभी अनम्यूट का ऑप्शन ओपन किया हुआ है. राजेश जी नमस्कार. दीपक जी नमस्कार. हेलो अरुण जी. हेलो, कैसे सर? ऑल गुड. कमलेश जी नमस्कार. कमलेश जी. हम 2 मिनट में स्टार्ट कर लेते हैं. गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अभय भाई, रोशन जी एंड all my good evening sir and all my good friends and my senior members. सभी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो एक कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि Good evening, everyone. Good evening, myself Triveni from Bangalore. Okay. So you are the third participant from Bangalore. I have seen 2 names, other names also from Bangalore and Hyderabad. So in this virtual connect during lockdown and technological advancement, this is the opportunity so that we can connect from the entire nation in a single window. Exactly. So we are into a renewable energy business, so power business. Okay.
So Okay. I am more keen to know about the on the front of because that GST is exempt. Okay. Definitely, we will try to cover the topic as we have given the detail. Apart from this, earlier we have organized a industry specific series. I will share the entire list of our webinars earlier held, Oh, recording oh, list, so that you oh, can search as per your requirement, and you can watch oh, those programs. great. Thank you. If you could share me that. We have organized more than 250 webinars in last 8 to 9 months when COVID Okay. from first Okay. of Feb. I want to know more about our business. So if you could Sure. share that, please. It will be my pleasure. Yeah. अरुण जी स्टार्ट करते हैं. Do we have a topics for today? Today, like for the Yes, next madam. 4 days? I think you have not seen the message where you have done the registration. Entire 4 days topic I have given already. Okay. Okay. I've not seen it yet. I will tell you once again. I will tell you once again in my speech. Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. Rather, I should say good evening, everyone. And once again, welcome to this CASA refresher course on GST. And I know everyone is connected with this CASA platform earlier also. In the last less than 1 year, we have organized more than 250 webinars on different topics. But today, this 4 days refresher course on June, in which we will try to cover the topic which we have designed, which is very much important for every practicing professionals nowadays. And in 4 days, 4 faculties, eminent faculties from North India. First day, see Arun Chajarji with us. Arunji, welcome to you. Thank you. Arunji will discuss all about the GST Qrmp schemes and other 3B and GSTR1 alignment practical issues. Tomorrow we will discuss composition scheme, and I would try to cover the entire topic should be covered, and thereafter if you have any query, so we can take up those query in the last of the session. And third day, CA Tarun Arora from Gurgaon, he will discuss about the export, import and refund under GST and various amendment in the Finance Bill 2021. Thereafter, Sunday, eminent expert CA Achal Kapoorji from Amritsar, she will talk about GST annual returns, GST audit and annual return. So this 4 days topic will be covered in the next 4 days. Apart from this, if you have a specific query, you can post in the last of the 4th day session, so that we also try to cover those query. And I will share the entire recordings of these 4 days. And apart from this, presentations and material, which will be shared by the faculties. And my number is, I think everyone is having my number. So if you have any further query, clarifications and issue, you can talk to me personally as well. And apart from this GST series, we will try to cover other important series like bank audit, FEMA and other topics. But now 4 days, we will try to cover the GST practical aspect, starting from day one, Qrmp scheme and applicable GST 3B, GSTR1 and other issues. And about CA Arun Chajarji, acclaimed faculty in North India, and he is teaching with the various platforms and MSME impaneled faculty, and delivered more than 100 sessions in our institute with the regional council branches and study circles. So, and apart from this, he is my good friend also. So Arunji, once again, welcome to you on this day one. Thank you very Now much. I request you to take up the first session. Over to you, Arunji. Thank you. So good evening to all. And Sumiji, very good evening and thank you for choosing me for the first webinar. And it's really, जब भी कासा पे आते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं कोई स्पीकर हूँ. ये अपना ही प्लेटफॉर्म लगता है जहाँ पे जो मुझे आता है मैं अपने थॉट शेयर करता हूँ और यहाँ पे एक नॉर्मल अपना डिस्कशन होता है. That's it. So today topic
is divided in 3 parts. Basically पहला पार्ट क्या है, QRMP स्कीम, उसके बाद में हम बात करेंगे GSTR 3B के रिगार्ड में, उसके बाद में शॉर्ट में बात करेंगे GSTR 1 के रिगार्ड में। क्वेरी पैटर्न कैसा होगा, जैसे ही मैं पहला पार्ट कंप्लीट करूंगा, I will discuss 5 to 10 minutes of your queries. The query would be over the chat only initially. At the end, if someone like to speak, then we will allow you to unmute yourself and then discuss with us. But initially जो होगा 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट 15-20 मिनट लगेगा, उसके बाद में 10 मिनट हम क्वेरी रख लेंगे। Again we'll have the 20-30 minutes on 3B. We'll again have the query session for 10 minutes, and in the last we'll cover in the same pattern GSTR1. That would be the pattern. ठीक है। So सुमित जी, I'm starting. श्योर सर। ठीक है। सो आज हम बात करते हैं पहले QRMP के रिगार्ड में। सर्कुलर 143 QRMP, हम सभी जानते हैं कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो मैं QRMP ऑप्ट कर सकता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द QRMP? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अगर मैंने ऑप्ट कर लिया तो QRMP में भी 2 ऑप्शन है। वुड यू लाइक टू गो फॉर द क्वार्टरली और मंथली स्कीम? इट मींस व्हाट इज द QRMP? रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर जाएगा और जो टैक्स का पेमेंट होगा वो मंथली बेसिस पे होगा। अब यहां एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी। पहले हम क्या करते थे, अगर मैं दिसंबर की बात करता हूं तो हम 3B मंथली बेसिस पर फाइल करते थे। वी आर फाइलिंग द GSTR 3B ऑलवेज मंथली, बट 1 कैन बी क्वार्टरली और 1 कैन बी मंथली। नाउ after the QRMP, the combination would be same. If monthly, then 3B and the 1 both monthly. If quarterly, then 3B and the 1 both quarterly. ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं एक को क्वार्टरली चूज कर लूं और एक को मंथली चूज कर लूं। नॉट पॉसिबल इन QRMP। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैंने क्वार्टरली सेलेक्ट कर लिया, QRMP क्वार्टरली सेलेक्ट कर लिया, तो 2 काम मुझे मंथली करने पड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट क्वार्टर की, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वार्टर ओनली। फर्स्ट क्वार्टर मींस Jan to March। इसमें अगर मैंने QRMP ऑप्ट कर लिया, if I have opted QRMP, then for the month of Jan, for the month of Feb and for the month of the March, ये जो लास्ट मंथ है क्वार्टर का, इसमें तो मैं GSTR 1 एंड GSTR 3B क्वार्टरली फाइल करूंगा एज यूजुअल, जैसा मैं अभी कर रहा हूं। बट फॉर फर्स्ट 2 मंथ मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। एक, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा PMT 06, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा PMT 06। इस पेमेंट को करने के लिए भी 2 मेथड सजेस्ट किए गए हैं। कौन से 2 मेथड है हम अभी बात करेंगे, बट एक तो मुझे PMT 06 फाइल करना होगा जनवरी का भी और फरवरी का भी। पर्पज क्या है? ताकि मैं टैक्स का पेमेंट कर सकूं। कैसे करना है, दैट वी विल डिस्कस। व्हाट इज द मेथोडोलॉजी अवेलेबल। दूसरा, IFF, मैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपना डिटेल्स सबमिट करूंगा। ये IFF क्या है और PMT 06 में क्या नया चीज आया है, दैट वी विल डिस्कस। बट अभी मुझे इतना समझ आया कि मुझे जनवरी मंथ और फरवरी मंथ के लिए 2 काम करना है, PMT 06 और IFF।
क्या ड्यू डेट है पीएमटी की? सर 25th। और क्या ड्यू डेट है आईएफएफ की? 13th। सो आई कैन से बाय 25th of Feb and then 25th of March I need to furnish, and for IFF it would be 13th. Simple. आगे बढ़ते हैं. That I have discussed. अभी एक क्वेरी सबके माइंड में आती है, सर मैं कैसे सेलेक्ट हो गया क्वार्टरली के लिए? मैं तो अपना रिटर्न मंथली फाइल करता था, मैं कैसे सेलेक्ट हो गया क्वार्टरली के लिए? और कोई ऑप्शन है? अब मैं चेंज करना चाहता हूं फॉर फर्स्ट क्वार्टर जैन टू मार्च. पहला क्वेश्चन कि मैं कैसे सेलेक्ट हो गया? देयर वाज ए डीम्ड कन्वर्जन और द डीम्ड और डिफॉल्ट ऑप्शन. अगर आपने चूज कर लिया बाय 31st जैन, मैं किसकी बात कर रहा हूं? जैन टू मार्च फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूं, जिसकी लास्ट डेट क्या थी? 31st जैन थी. मुझे अपनी क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है? या तो मैं कम्युनिकेट कर दूं पोर्टल पर जाकर, अदरवाइज सिस्टम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करेगा. वो बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट करेगा? क्या बेस है? वो हमारा 3B और 1 की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है. देयर इज ए सेपरेट स्लाइड विच वी विल डिस्कस. बट मेरा पॉइंट है कि आज अगर QRMP हो गया जबकि मैं नहीं चाहता, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूं? आंसर इज नो. फॉर द क्वार्टर जैन टू मार्च यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस. वॉइस इंटरप्टिंग. किसकी वॉइस? मेरी वॉइस? एक सेकेंड रुकिए. नहीं, एवरीवन इज अनम्यूटेड, एवरीवन इज म्यूटेड. बुसरा जी, इज इट ओके नाउ or still you are facing some problem? Requesting every participant to confirm voice is okay. एक बार सभी पार्टिसिपेंट कंफर्म करेंगे कि वॉइस ऑडिबल है. फाइन, थैंक यू वेरी मच. पहला पॉइंट है कि QRMP जो ऑप्ट करने का टाइम होता है, एक पीरियड होता है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, उसके बीच में मुझे अपना चॉइस बताना है. अगर वो लास्ट डेट चली गई तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट पिक करेगा और उसको मैं उस क्वार्टर के लिए चेंज नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वार्टर का टाइम पीरियड जब भी ओपन होगा तब मैं चेंज कर सकता हूं. क्या पीरियड है? सर फर्स्ट जो करंट क्वार्टर है जैन टू मार्च, उसका प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या है? अक्टूबर टू दिसंबर. फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ, इट मींस 1st नवंबर टू करंट मंथ, जिसके लिए आप QRMP ऑप्ट करना चाहते हैं, करंट क्वार्टर, उसका फर्स्ट मंथ दैट इज जैन, उसका लास्ट डे 31st जैन. इसका मतलब लास्ट डेट जैन टू मार्च के लिए क्या है? सर पहला महीने का लास्ट डे 31st जैन. इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू ऑल द पार्टिसिपेंट, अगर मुझे जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए ऑप्ट करना है, अगर मुझे जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए ऑप्ट करना है, तो वो क्या पीरियड होगा जिसके अंदर मुझे अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, विद इन विच आई हैव टू कन्वे माय चॉइस थ्रू GST पोर्टल? कैन यू प्लीज टेल मी द पीरियड विद इन विच I have to give my consent, I have to give my choice in the GST portal for going to the QRMP scheme? एब्सोल्युटली करेक्ट. स्टार्ट कब से हो जाएगा? स्टार्ट कब से हो जाएगा? प्रीवियस क्वार्टर, अप्रैल टू जून, सेकेंड मंथ मई, तो स्टार्ट हो जाएगा 1st मई. और कब तक? करंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ, करंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ दैट इज जुलाई. सो 31st जुलाई, 1st मई टू 31st जुलाई है
अगर आप जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, तो अभी जो ऑलमोस्ट सभी का क्वेश्चन आता है कई बार कि सर मेरा ऑटोमेटिकली ऑप्ट हो गया, क्या मैं चेंज कर सकता हूं? आंसर इज नो। सर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं कब कर सकता हूं? 1st Feb to 30th April. It means it's already started. It means it already started, but it's already started means for the next quarter, April to June. ये पार्ट अगर सपोज करो मेरी प्रीसीडिंग क्वार्टर में मेरी जो टर्नओवर थी प्रीसीडिंग क्वार्टर में या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में जो मेरी टर्नओवर थी वो लेस देन 5 करोड़ थी। अब इस करंट क्वार्टर में से इन द मंथ ऑफ जुलाई आई हैव रिसीव्ड वन ऑर्डर ऑफ रुपीज से 10 करोड़। क्या मैं अगस्त से इनएलिजिबल हो जाऊंगा, या मैं अक्टूबर से इनएलिजिबल होऊंगा, या मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इनएलिजिबल हो जाऊंगा? किस चीज की इनएलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं सर? इनएलिजिबिलिटी फ्रॉम QRMP वेयर आई नीड टू फर्निश मंथली रिटर्न। जब अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो जाती है तो मैं किस मंथ से इनएलिजिबल होऊंगा? नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एब्सोल्युटली करेक्ट। द राइट आंसर इज फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर। जुलाई में अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड भी हो जाती है तब भी आप अगस्त के लिए और सितंबर के लिए एज यूजुअल जैसा QRMP में आप फाइल कर रहे हैं एज इट इज आप फाइल करेंगे, बट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर यू वुड बी इनएलिजिबल फ्रॉम QRMP। आपको ऑप्ट आउट करना होगा। जो मैं बार बार बात कर रहा था डिफॉल्ट ऑप्शन की, अभी जो डिफॉल्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ है उसका बेस क्या है? उसका बेस है कि आपकी अगर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ थी तो आप क्या कर रहे थे? आप 3B तो ऑलवेज मंथली फाइल कर रहे थे, बट GSTR1 में दो ऑप्शन थे, आइदर क्वार्टरली और इफ यू लाइक टू गो देन मंथली। बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। इफ द टर्नओवर एक्सीड इन द करंट क्वार्टर बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। आई थिंक वी हैव टू ऑप्ट, बट वी नीड टू वेट फॉर द सिस्टम टू सेलेक्ट। बट प्रोबेबली क्या है सर, इनिशियली हो सकता है ये मैनुअल सिलेक्शन हो, बट उसके बाद में ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। एग्रीगेट टर्नओवर अगर अप टू 1.5 करोड़ है तो आपका GSTR1 नॉर्मल क्वार्टरली है, अगर आप चाहें तो मंथली भी फाइल कर सकते हैं। और अगर मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऑलवेज मंथली। सो व्हाट इज द डिफॉल्ट ऑप्शन? अगर आप इसमें हैं अप टू 1.5 करोड़ है और आप 1 क्वार्टरली फाइल करें, यू विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द QRMP। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग 1.5 है बट अप टू 5 है, then also QRMP। बट जहां पे आपके पास ऑप्शन था कि GSTR1 क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं बट आपने वहां पे मंथली सेलेक्ट किया, तो फिर क्या होगा? ये भी मंथली में ही कन्वर्ट होगा, नॉट इन द क्वार्टरली। IFF के बारे में हम बात कर लेते हैं। IFF क्या है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये है क्या? GSTR1 की जितनी भी टेबल है उसमें उन टेबल को रखा गया है जो B2B के ट्रांजैक्शन से बिलोंग करती है, और उन सभी टेबल को हटा दिया गया है जो B2C के ट्रांजैक्शन से लिंक थी। कहने का मतलब IFF और GSTR1 कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट IFF will have the relevant table of only B2B। तो अगर आप अभी देखेंगे, अगर आप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो जहां पे वो IFF को ओपन करेंगे ना तो एग्जैक्टली सेम दिखेगा जैसा GSTR1 है, बट वहां पे क्या है? टेबल 4 को रखा गया है, 4A 4B 4C या 6B 6C। टेबल 5 जो B2C की बात कर रहा है
वो हटा दिया। टेबल 6A, नाउ इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल द पार्टिसिपेंट। 6A जो कि एक्सपोर्ट की बात करता है, आप मुझे बताएं क्या ये टेबल अभी अपीयर होगी या नहीं होगी इन द IFF? करेक्ट आंसर इज, जो मेरा एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन है, जो मेरा एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन है, जो मेरा एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन है, वो जो मैं 6A में रिपोर्ट करता हूं, ये भी मेरा B2C ट्रांजैक्शन है, देयरफॉर इन द IFF इट विल नॉट अपीयर। फर्स्ट पॉइंट। बट पॉइंट क्या है, अगर मैंने 6A में एंटर नहीं किया, अगर मैंने 6A में एंटर नहीं किया तो क्या चीज से लिंक है सर? प्रॉब्लम आएगी आपके रिफंड में, प्रॉब्लम आएगी आपके रिफंड में। एंड आई होप वी ऑल एबल टू रिकॉल द इनिशियल डेज ऑफ द GST, इनिशियल डेज ऑफ द GST, जहां पे जब GSTR1 नहीं आया था, उन्होंने हमारे रिटर्न डैशबोर्ड पर एक टेबल अपीयर करवा दी थी जिसका नाम टेबल 6A था। इन द सेम मैनर दे आर वर्किंग, इट इज अपीयरिंग, करंटली इट इज अपीयरिंग, बट प्रॉब्लम क्या है, उसमें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा डिटेल। तो टेक्निकल ग्लिच है, वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो आई कैन से द 6A वुड बी प्रोवाइडेड सेपरेटली, within which we can add the same of my export detail, therefore refund में कोई problem नहीं हो। Is it clear? Please confirm whether table 6A and IFF both are clear. Fine. IFF में एक मैक्सिमम जो लिमिट रखी है, वो लिमिट क्या रखी है? 50 लाख पर मंथ। Yes, 6A is only for the export. It can be the goods or it can be services. IFF फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर फाइल करना है, और थर्ड मंथ तो आप GSTR1 फाइल करेंगे। द डिटेल्स विच हैज ऑलरेडी बीन फर्निश्ड थ्रू IFF, the details which has already been furnished through IFF, you are not required to furnish again in the GSTR1. Details which will be added in the IFF by the due date 13th, it will appear in the 2A, 2B of the recipient. अगर 13 तक फाइल कर दी तो रिसिपिएंट के सेम मंथ में आ जाएगा, 2B की बात कर रहा हूं। और अगर 13 के बाद फर्निश किया या नेक्स्ट मंथ में फर्निश किया या फर्निश नहीं किया, it will not come in the current 2B, it will come in the next 2B, जिसका इंपैक्ट ITC पर आएगा। हम डिस्कस करते हैं कि QRMP में ITC की कैसे कैलकुलेशन होगी, QRMP में ITC का क्या रिलेवेंस होगा, और पेमेंट ऑफ टैक्स मैं कैसे करूंगा। फ्रॉम माई साइड IFF में इतना ही है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। यस, IFF HSN कोड समरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, राइट। So again GSTR1, again the point is IFF is not mandatory, it's optional. We can say this is the resolution of the problem which we are facing with respect to ITC. IFF is the solution for the problem which all the recipient are facing where the supplier has opted quarterly. अगर सप्लायर ने क्वार्टरली ऑप्ट किया है तो जो रेसिपिएंट है उसको प्रॉब्लम होती थी कि उसको ITC एक क्वार्टर के बाद मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सर टैक्स का पेमेंट कैसे होगा? दीपक जी, फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ हमें रिपोर्ट नहीं करना है, थर्ड मंथ जब मैं GSTR1 फाइल करूंगा तब मैं वहां पे रिपोर्ट करूंगा B2C ट्रांजैक्शन। नाउ moving to the very important point and problem. Sir,
जब मैं मंथली बेसिस पर क्यूआरएमपी में मंथली बेसिस पर जब मैं टैक्स का पेमेंट करूंगा पीएमटी 06, अब क्या पीएमटी 06 नॉर्मल जैसे चालान पे करते हैं वैसे पे करेंगे? नहीं सर, वहां पे उन्होंने दो ऑप्शन दे दिए कि अगर आप क्यूआरएमपी के कारण पे कर रहे हैं देन यू सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन और अदरवाइज सेकंड ऑप्शन। सेकंड मतलब नॉर्मल चालान जैसा हम पे करते हैं। हाँ, अगर मैंने क्यूआरएमपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो पहला पॉइंट आता है फिक्स सम मेथड और दूसरा आता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। इसमें हमें बात करने की रिक्वायरमेंट है, इसमें हमें थोड़ा डिटेल में जानने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहां पे आईटीसी का रोल प्ले होगा कि आईटीसी कैसे मिलेगा एंड ऑल्सो whether fixed sum method is applicable or not. Now we all know that there are two method. We all know that there are two method. Fixed sum method क्या बात करता है? Fixed sum method कहता है कि अगर आपकी प्रीसीडिंग क्वार्टर की, अगर आपकी प्रीसीडिंग क्वार्टर की 3B की फ्रीक्वेंसी अगर मंथली है या क्वार्टरली है, अगर क्वार्टरली है, फॉर एग्जांपल मैं जिस क्वार्टर में खड़ा हूं उसके पीछे वाले क्वार्टर के 3B की फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, तो इस महीने और अगले महीने फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ यू आर रिक्वायर्ड टू पे 35% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। एंड कौन सी टैक्स लाइबिलिटी? ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी? नहीं सर, टैक्स लाइबिलिटी का वो पोर्शन जो आपने कैश में पे किया है, टैक्स लाइबिलिटी का वो पोर्शन जो आपने कैश में पे किया है उतना आपको अभी फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ पे करना है। अब अगर मैं बात करूं, क्या मैं जनवरी मंथ में ये बोल सकता हूं कि मेरी प्रीसीडिंग क्वार्टर की फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली थी? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो प्रीसीडिंग क्वार्टर है अक्टूबर टू दिसंबर, किसी भी केस में क्या 3B में क्वार्टरली फाइल करता था? इन एनी ऑफ द केस नॉट पॉसिबल सर। सर हर केस में तो 3B मंथली था, तो इन दिस केस द सेकंड ऑप्शन वुड कम इनटू द प्ले, मीनिंग देयर बाय 100% of the tax liability which you paid in last month, 100% of the tax liability which you paid in the last month in cash, equivalent amount you had to pay in the first month and second month. सर इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि सर मैं फर्स्ट क्वार्टर के लिए फिक्स सम मेथड ऑप्ट नहीं कर सकता। आई कैन ऑप्ट फॉर द फिक्स सम मेथड, बट जो परसेंटेज होगा वो 35 नहीं होगा सर, वो 100% होगा। और रीजन क्या है 100% का? कि सर जो प्रीसीडिंग क्वार्टर है वहां पे 3B की फ्रीक्वेंसी मंथली थी, जितना टैक्स मैंने कैश में जमा करवाया है उतना का उतना मुझे अभी जमा करवाना पड़ेगा। अब पॉइंट क्या आता है, आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। पॉइंट क्या आता है कि अगर मैंने फिक्स सम मेथड क्लिक किया, इस बार जैसे मैं नॉर्मली बात करता हूं, मैं अगर टिक करता हूं और एज्यूम करो आपने सारा का सारा जो लाइबिलिटी है वो कैश में नहीं पे किया, सारा का सारा आईटीसी से पे किया। दिसंबर 3B में जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी थी, पूरी टैक्स लाइबिलिटी का जो पेमेंट हुआ है वो आईटीसी के माध्यम से हुआ है। इन दैट केस आपको क्या फिक्स सम मेथड में अमाउंट ऑप्ट करना पड़ेगा? जैसे ही आप फिक्स सम मेथड ऑप्ट करेंगे क्या अमाउंट आएगा वहां पे? नहीं आएगा सर, ऑटोमेटिकली एक मैसेज आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि लास्ट मंथ में मेरा कोई भी टैक्स का पेमेंट कैश में नहीं हुआ। मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, हो सकता है इंटरेस्ट आपने पे किया हो सकता है लेट फीस आपने पे की हो, उसको कंसीडर नहीं करना है। If there is a tax liability which has been paid in cash, then only the fixed sum method will calculate some amount. अब देखो, अब सेकंड पॉइंट क्या आता है, मान लो आपने कोई भी कैश में पे नहीं किया, दिसंबर 3B की बात कर रहा हूं, इस मंथ फिक्स सम मेथड के अकॉर्डिंग अमाउंट 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ
मुझे मैंडेटरली सेल्फ असेसमेंट में जाना पड़ेगा या मैं कुछ भी ना पे करूं तो चलेगा? दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल द पार्टिसिपेंट, रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू गिव योर थॉट। आपकी रिप्लाई में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मान लो आपका जो क्लाइंट है, फिक्स सम मेथड पर जब आप जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो वहां पे अमाउंट 0 आ रहा है क्योंकि देयर इज नो टैक्स लाइबिलिटी इन दिसंबर व्हिच हैज बीन पेड इन कैश। नाउ माय पॉइंट इज, do you have to opt self assessment method mandatorily for the January and pay the tax, or I will not require to pay any tax, or I will not require to pay any tax? This is my question. नहीं, बाय डिफॉल्ट सेल्फ में नहीं आ रहा सर, बाय डिफॉल्ट सेल्फ में नहीं आ रहा। आप चाहें तो सेल्फ असेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नो टैक्स, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे द टैक्स। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक क्वार्टर के लिए होगी, आगे आने वाले क्वार्टर के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ व्हाट इज द सेल्फ assessment? Acha, one more thing. If I have opted the fixed sum method, if I have opted a fixed sum method, how the ITC will come into the picture? How the ITC will come into the picture? I can say if I have opted fixed sum method, there is no requirement to consider the ITC. There is no requirement to consider the ITC because यहां पे तो मैं सिर्फ कैश पोर्शन को पे करने की बात कर रहा हूं। यहां पे लास्ट मंथ या लास्ट क्वार्टर कितना कैश पेमेंट किया है उसका 35% या 100% मुझे पे करना है। बट व्हाट इज द सेल्फ असेसमेंट मेथड? व्हाट इज द सेल्फ असेसमेंट मेथड? इन द सेल्फ असेसमेंट मेथड, in the self assessment method, you need to calculate your tax liability, you need to calculate your ITC. यहां पे जो ITC का अमाउंट का कैलकुलेशन है वो टू बी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है, and then you will calculate your tax liability, net tax liability, and then pay the same through PMT 06. यहां पे भी आपको कोई रिटर्न फर्निश नहीं करना है, यहां पे भी आपको सिर्फ टैक्स डिपॉजिट करना है अंडर द PMT 06 अंडर द रेडियो बटन और ऑप्शन ऑफ QRMP। मेरी तरफ से QRMP कंप्लीट हो गया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है QRMP से रिलेटेड एक बार आप पूछिए। If seller is only to unregistered, not required to file, absolutely correct sir. अगर मेरा सारा ट्रांजेक्शन B2C का है, मुझे कोई भी मुझे IFF फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रेदर आई शुड से आई कैन नॉट फाइल द IFF बिकॉज वहां पे कोई टेबल ही नहीं है B2C वाली। एक क्वेश्चन ऊपर आया था, अंजलि जी ने पूछा है कि व्हाट अबाउट द इनवॉइस एक्सीडिंग 50 लाख इन ए मंथ? मैक्सिमम अपर कैप है, 50 लाख से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। तो अगर मान लो ज्यादा है देन यू हैव टू लीव एज इट इज, यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट मंथ। ये प्रॉब्लम है। PMT 09 अलग है सर, ये काफी पहले आ चुका था। इंटरशिफ्टिंग PMT 06 कहां दिखता है? क्रिएट चलान सर, क्रिएट चलान। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूं, लॉगिन में आता है एनुअल रिटर्न डैशबोर्ड क्रिएट चलान, तो चलान पर क्लिक करना है क्रिएट चलान, और जैसे ही क्रिएट चलान होगा वहां पे वो PMT 06 आ जाएगा। हाउ टू फाइल IFF? गो टू द रिटर्न डैशबोर्ड, सेलेक्ट द टैक्स पीरियड। जैसे ही आप टैक्स पीरियड सेलेक्ट करेंगे जनवरी मंथ में वो IFF आएगा, जैसा अभी हमारे पास में GSTR1 आता है। ओके, सो विल वेट फॉर 10 मतलब 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर पे मतलब रिप्लाई करूंगा मैं। आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ द सेलर इज सेलिंग ओनली टू द अनरजिस्टर्ड देन इज नॉट रिक्वायर्ड। मोहित मक्कर जी, इन सेकंड मेथड कैन आई चेंज मेथड ऑफ पेमेंट? इन सेकंड मंथ probably you are asking, can I change the method of the payment? In my view, yes. As per the law, there is no restriction. Please give the permission to record.
it will be recorded at our end CASA, and CASA will provide the recording to all the participant. Rest to be sure, it will be provided recording to all the participant. क्या होगा अगर मेरा नील रिटर्न है? सर अगर नील रिटर्न है तो मुझे कुछ फर्निश ही नहीं करना, neither tax nor IFF. So I'm not required to furnish anything. PMT 09 showing what is this? सर टैक्स का शिफ्टिंग, IGST में आपका टैक्स जमा करवा दिया, आप I को C में ट्रांसफर कर सकते हैं, C को S में ट्रांसफर कर सकते हैं. ये जो इंटर शिफ्टिंग थी टैक्स का पेनल्टी में, पहले प्रॉब्लम हुआ करती थी अगर मैंने गलती से टैक्स की जगह फीस में जमा करवा दिया. प्रॉब्लम क्या थी? अब मैं उस अमाउंट को यूटिलाइज ही नहीं कर सकता था. नाउ इट इज एन ऑप्शन टू शिफ्ट द अमाउंट फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड. In 1 month can we shift to self? In my view, Shruti Goyal ji, definitely we can shift because कहीं selection नहीं है. जब मैं PMT 06 क्रिएट करता हूं तो वहां पे 2 ऑप्शन आएंगे और वहां पे मुझे एक सेलेक्ट करना है. बट चलान में PMT 6 नहीं लिखा होता है, वो चलान ही PMT 6 है. करेक्ट, वो जो चलान है ना वो चलान PMT 06 है. अब जैसे अगर हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं रजिस्ट्रेशन की, एप्लीकेशन कौन सी है सर? REG 01. कहीं REG 01 लिखा आता है लेकिन हमें नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, वो चलान ही PMT 06 है. वो जो फॉर्म है वो रूल में जो प्रिस्क्राइब किया है वो PMT 06 का है. With respect to Gaurav ji, ITC of 2A, I don't think any relevance of 2A after amendment in the rule 61. बट 2A की रिलेवेंस मालूम कहां पे हमें हेल्प करेगी? क्योंकि 2B को हम कब देख सकते हैं? 2B को तो वो डेट खत्म होने के बाद देख सकते हैं. 2B को हम डेट खत्म होने के बाद देख सकते हैं, पर हम अपनी टीम को ये बोल सकते हैं तुम रेगुलर बेसिस पर मेरे क्लाइंट का 2A चेक कर, या मैं क्लाइंट के अकाउंटेंट को बोल सकता हूं तुम्हारी जो परचेज की है इस मंथ में 2A में देखते रहो, अगर किसी सप्लायर ने फाइल नहीं किया है तो आप उनसे फॉलोअप करके फाइल करवा लीजिए. क्योंकि 13 के बाद में अगर आप डाउनलोड करेंगे और मालूम चलेगा कि फाइल ही नहीं किया, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. बट हाँ 2A से मुझे मालूम चल जाएगा किसने फाइल नहीं किया, so that I can do the follow up. But with respect to the ITC, now the 2B will come into the, now the 2B has to be considered. Mayank ji, which method to opt in case of RCM? सेल्फ असेसमेंट ही होगा सर. फिक्स सम मेथड में तो मेरे सबसे अमाउंट जितना भी टैक्स लायबिलिटी पे किया है, मेथड पेमेंट करने के लिए कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट फिक्स सम मेथड में क्या है वो फिक्स परसेंटेज आएगा और सेल्फ असेसमेंट में आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं. यस अंजलि यादव जी बिल्कुल सही. 2A will show the relevant credit of 50 lakhs only and the rest upon filing the GSTR1. Could you please repeat one reason for चालान? आलोक कुमार अग्रवाल जी आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं पोर्टल लॉगिन करके आपको बता दूंगा. ऐसा करता हूं, मैं पोर्टल लॉगिन करके PMT 06 कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको लॉगिन करके बता दूंगा. दैट वुड बी बेटर फॉर ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट. हरकृत सिंह जी, नो लाइबिलिटी अराइज अंडर फिक्स सम इफ ITC is utilized in the previous month. हाँ, नो लाइबिलिटी, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. Is it for both for monthly and quarterly filer? किसकी बात कर रहे हैं? आपका क्वेश्चन एक बार वापस पूरा सेंटेंस एक ही साथ लिखिए. दीपक कुमार जी, इन केस ऑफ द, काफी सारे क्वेश्चन है, मैं थोड़े फास्ट में कवर करता हूं. दीपक कुमार जी, इन केस ऑफ जनवरी 21 इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स, व्हाट इज द कंप्लायंसेस? ITC ज्यादा है, आउटपुट कम है. GSTR1 IFF फाइल करना है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, आपका टैक्स कोई है ही नहीं तो फिर आपको कोई PMT 06 क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ ओनली IFF. Are exempt supply taken into account while calculating 5 crore limit? Obviously yes, because definition aggregate turnover की जो definition है वो 2 clause 6 से derive होती है. aggregate turnover which include all taxable supply, all exempt supply, all export and all interstate distinct person, सभी को मुझे ऐड करना है. What about the RCM payment? Whether is it mandatory to pay monthly or quarterly? As of now, अगर आप जो भी मेथड अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड चूज करते हैं तो अगर RCM की लायबिलिटी है तो आपको पे करनी पड़ेगी, नॉट की क्वार्टरली. If I have paid in December but in the month of Jan we have excess in GST, what to do? एक बार सुनील जी, if I have paid 1 lakh in say December
but in the month of the Jan we have excess in GST. आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से 1 लाख रुपए पे किया। सुनील मंगला जी, मैं आपको अलाउ कर देता हूं, आप अपनी क्वेरी को बताएं। आप अपने आप को मुझे स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक बार कैमरा ऑन करेंगे। जैसे आप कैमरा ऑन करेंगे, हाँ फाइन सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप एक बार अनम्यूट करें, अपनी क्वेरी बोलें। नमस्कार अरुण जी, मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट दिसंबर मंथ में मैंने 70,000 रुपए कैश लेजर से पे किया है। परफेक्ट। जनवरी में मेरी परचेज ज्यादा है, सेल कम है, तो मेरा एक्सेस ऑलरेडी बन रहा है। परफेक्ट। तो वेदर आई हैव टू पे द फिक्स्ड मेथड अमाउंट और आई शुड गो फॉर सेल्फ असेसमेंट? मेरे हिसाब से सेल्फ असेसमेंट में जाना चाहिए। और जो 2A में शो हो रहा है वो 2B में जो शो 2B में तो बाद में शो होगा, 2B के हिसाब से ले हम लोग उसमें इनपुट। जी डेफिनेटली 2B 13 तारीख के बाद में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, तो जो भी होगा उसके हिसाब से ले। ठीक है सर, थैंक यू। IFF इज ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी, बट फाइल करना इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि जो आपका कस्टमर है उसको लॉस नहीं हो ITC का। Now I am moving to the GSTR 3B. Now I am moving to the GSTR 3B considering the time constraint. हमारे पास total 2 hours है। Now next half an hour it would be only on the 3B, and then after 10 minutes, after that we'll take the query of 10 minutes on 3B. GSTR 3B है क्या? हम सभी को मालूम है एक मंथली समराइज्ड रिटर्न हुआ करता था। अब मैं कह सकता हूं कि मंथली या क्वार्टरली। करेक्ट, अब मैं कह सकता हूं या तो मंथली या क्वार्टरली। क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है वो पॉइंट का डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूं। 3B कौन फाइल करेगा? या तो रेगुलर टैक्स पे या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई रेक्टिफिकेशन है एरर में, अगर कोई रेक्टिफिकेशन है तो उसे कैसे ठीक करना है? कोई भी एरर, कोई भी गलती कर दी तो उसे मैं रेक्टिफाई करूंगा in such form such manner as may be prescribed subject to the interest and what is the time limit। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। रेक्टिफिकेशन करने की भी एक टाइम लिमिट है सेक्शन 39 की, ठीक है? नॉर्मल टाइम लिमिट वही सितंबर मंथ। अब जहां जहां हम सितंबर रीड करते थे कि सितंबर आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वहां सब जगह ये वाला पॉइंट आएगा। अभी सब जगह ये पॉइंट लिखा हुआ नहीं है। अगर मैं बात करता हूं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, ITC लेने की लास्ट डेट क्या है? ठीक है, सितंबर आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वहां पे भी ये बात लिखी हुई रहेगी। और सेकेंड क्वार्टर आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नाउ बिकॉज GSTR 3B कैन बी मंथली और इवन इट कैन बी द क्वार्टरली। 3B मैं बात करता हूं 3B का जो स्टार्टिंग टेबल है वो मैं डायरेक्टली वहीं पे आता हूं। 3B की स्टार्टिंग टेबल है 3.1। अगर मैं एग्जैक्ट आपको स्क्रीनशॉट बताता हूं पोर्टल का तो आप इजीली कोरिलेट कर पाओगे। ये मेरा 3.1 है। यहां पे मैं क्या करता हूं, अपनी आउटवर्ड सप्लाई बताता हूं और साथ में एक ऐसी इनवर्ड सप्लाई बताता हूं जो मुझे टैक्स पे करना है, जिसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है। क्या कहना चाहता हूं मैं? आई एम सेइंग दैट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ITC टैक्स लाइबिलिटी ऑन द RCM आई नीड टू डिस्क्लोज। यहां पे अगर मैं क्विकली बोलूं 3.1.A, B, C and E 4 are outward supply and 3.1.D is my inward supply। क्लियर? अगर मेरी सप्लाई नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है, तो मैं यहां पे रिपोर्ट करूंगा। अगर मेरी सप्लाई जीरो रेटेड है मैं यहां पे रिपोर्ट करूंगा। अगर मेरी सप्लाई अदर देन दिस है तो मैं यहां पे रिपोर्ट करूंगा। यहां पे क्या क्या ट्रांजेक्शन आएंगे? सर ट्रांजेक्शन कैन बी ऑफ B2B, ट्रांजेक्शन कैन बी ऑफ B2C, इट कैन बी इंटर और इंट्रा, इट कैन बी कंपोजिट डीलर और रेगुलर डीलर, सप्लाई मेड टू कंपोजिट डीलर और रेगुलर डीलर or unregistered person. Any type of the supply will come in this except zero rated और nil rated। जीरो रेटेड क्या है? क्विकली मुझे बताएंगे व्हाट इज द जीरो रेटेड? क्विकली मुझे बताएंगे व्हाट इज द जीरो रेटेड?
I request every participant to give the quick reply. जीरो रेटेड क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर मैंने कोई एक्सपोर्ट किया है या मैंने SEZ को कोई सप्लाई की है, SEZ को कोई सप्लाई की है, तो वो मेरा जीरो रेटेड है. द वर्ड जीरो रेटेड हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, आई एम आस्किंग वन मोर क्वेश्चन. अभी कुछ अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 16 में. क्या अमेंडमेंट था? जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन में कुछ अमेंडमेंट हुआ है. जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन में कुछ अमेंडमेंट हुआ है. वो क्या अमेंडमेंट था? कैन यू हेल्प मी? फाइन. पहले क्या कहते थे? अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं या SEZ को सप्लाई करते हैं तो ये जीरो रेटेड है. अब SEZ में एक वर्ड और ऐड कर दिया, फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशन. इट मींस पहले ये पॉइंट था बट ये रिफंड के टाइम पे आता था, लेकिन अब अगर मैं SEZ को सप्लाई कर रहा हूं और अगर वो ऑथोराइज ऑपरेशन के लिए नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन आपका जीरो रेटेड नहीं होगा, नॉर्मल B2B इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा. आई हैव मेड 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम which we all probably are doing. So zero rated, nil rated, exempted, okay. Liable to reverse charge, that is clear. Non GST outward supply. Non GST outward supply, सर मैं क्विकली बता देता हूं. पहले हमें समझ में आता था ये उन ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग की बात करता है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता. मैं क्या समझता था कि सर नॉन GST क्या है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई है. व्हाट इज द नॉन टैक्सेबल सप्लाई? Word non-taxable supply has been defined in the GST. क्या कहता है? सर वैसी सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स लेविएबल नहीं है. I can say 1+5 alcoholic liquor for human consumption and 5 specified petroleum product. Petrol, diesel, HSD, aviation turbine fuel, natural gases. I was having the impression that non-taxable supply is nothing but the non-GST supply, but no, the thought has been changed once the GSTR 9 format has been released first time. Then they are saying in the non-GST supply, they are saying include no supply, include no supply. And what is the meaning of the no supply? No supply means schedule 3 supply. क्या मतलब हुआ? मैं वापस रिपीट करता हूं. मुझे जो 3.1.E में डिस्क्लोज करना है, मुझे जो 3.1.E में डिस्क्लोज करना वो क्या है मेरा? वो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज. अगर मैं अल्कोहलिक लीकर की सप्लाई करता हूं या पेट्रोल की सप्लाई करता हूं, और साथ में अगर मुझे कोई ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर हो रहा है तो वो ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट करना है. शेड्यूल 3 क्या है? नेगेटिव लिस्ट. एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच आर neither supply the goods nor supply the service. टोटल 8 ट्रांजेक्शन है. क्विकली अगर बोलूं, थोड़े बहुत अगर कोई मुझे रिकॉल करवा सकता है तो आई रियली अप्रिशिएट कि क्या ट्रांजेक्शन है शेड्यूल 3 में. एनी वन एग्जांपल ऑफ शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन? एनी वन एग्जांपल ऑफ शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन? यस, आई हैव रिसीव्ड फर्स्ट राइट आंसर. सैलरी, एम्प्लॉयर ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट फीस, ट्रिब्यूनल या कोर्ट को जो मैं देता हूं. यस, आई वुड लाइक टू लिसन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. पैरा नंबर 7 एंड पैरा नंबर 8, नॉन टेरिटरी सेल, फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल, या हाई सीज सेल, या कस्टम क्लियरेंस के पहले ही मैं सेल कर देता हूं. यस, डिसीज पर्सन, actionable claim, sale of the land and building subject to the para 5 of schedule 2. ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है. अगर ड्यूरिंग द मंथ कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी आउटवर्ड सप्लाई में है, उसको आपको रिपोर्ट करना है 3.1.E में, which we normally not report. Perfect. Going to the next table. अब मैं सिर्फ इश्यू की बात करूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करूंगा. आपको मुझे
बताना है कि ये ट्रांजेक्शन कहां पे आएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। इश्यू 1 2 3 एक्सपोर्ट मैं आपको समझा चुका हूं। व्हाट इज द डीम्ड एक्सपोर्ट? सर एक सेक्शन है 147, रीड विद नोटिफिकेशन 48/2017। क्या कहता है? 4 ट्रांजेक्शन डीम्ड एक्सपोर्ट है। कौन कौन से? अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को, या एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में मैं सप्लाई कर रहा हूं, या ईपीसीजी लाइसेंस के अगेंस्ट में मैं सप्लाई कर रहा हूं, या मैं गोल्ड की सप्लाई कर रहा हूं और सप्लायर कौन है? या तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये जो सप्लाई कर रहे हैं ना, ये भी एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में कर रहे हैं एंड सब्जेक्ट टू दी कस्टम नोटिफिकेशन 50/2017। एक कोई कस्टम का नोटिफिकेशन है। तो बेसिकली ये डीम्ड एक्सपोर्ट, मैंने आपको सिर्फ डीम्ड एक्सपोर्ट बताया है। अब आप मुझे बताएं डीम्ड एक्सपोर्ट कौन सी टेबल में जाएगा? डीम्ड एक्सपोर्ट कौन सी टेबल में जाएगा? 1.A, B, C, E और D? My question is the deemed export where I will report in A or B? पॉइंट कहां पे? जो भी मेरे क्वेश्चन है वो A और B में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, आइदर A और B। Everyone is saying B. Only for 1 minute sir, only for 1 minute। अच्छा, मंगला सर कह रहे हैं कि A और मोहित जी कह रहे हैं A। ग्रेट, 1 minute only, I'll give the reply। अच्छा, मर्चांट एक्सपोर्ट का जो ट्रांजेक्शन है ये कहां पे? मर्चांट एक्सपोर्ट क्या है? वो ट्रेडिंग, अगर मान लो मिस्टर ए है जो सप्लाई कर रहा है मिस्टर बी को, दोनों इंडिया में है, मिस्टर बी उसी माल को एज इट इज एक्सपोर्ट कर रहा है, से यूके में है मिस्टर सी, ही इज एक्सपोर्टिंग। तो ये ट्रांजेक्शन तो एक्सपोर्ट हो गया, लेकिन सप्लाई जो है ए टू बी सब्जेक्ट टू दी सर्टेन कंप्लायंसेस ऑफ द नोटिफिकेशन 40/2017। इसमें कुछ कंडीशन है जो बी को फुलफिल करनी है, जो ए को फुलफिल करनी है। अगर ऐसा होता है तो जो सप्लाई होगी वो 0.1% पर टैक्सेबल होगी। इसको क्या कहते हैं? इसको मर्चेंट एक्सपोर्ट कहते हैं। ओके, कैन यू टेल मी वेयर द मर्चेंट एक्सपोर्ट बी रिपोर्टेड? अच्छा, राजेश जी कह रहे हैं सभी तीनों बी में जाएंगे। ओके, अच्छा, मंगला जी कह रहे हैं ए में जाएगा। ओके, हरकिरत सिंह जी कह रहे हैं कि ए में जाएगा। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नाउ आई एम सेइंग, नाउ आई एम गिविंग माय रिप्लाई। अगर आप 3.1.b को वापस देखिए, 3.1.b को वापस देखिए, 3.1.b किस ट्रांजेक्शन की बात करता है? जीरो रेटेड। क्या जीरो रेटेड वर्ड डिफाइंड है जीएसटी में? 100% सर, सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अच्छा, वो क्या कहता है? वो कहता है दो तरह के ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट या एसईजेड की सप्लाई। क्या है मेरे? ये जीरो रेटेड है। अच्छा, एक्सपोर्ट भी डिफाइंड है। यस, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। गुड्स मतलब फिजिकल मूवमेंट फ्रॉम इंडिया टू आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। और सर्विस क्या कहता है? 5 कंडीशन है, 5 अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे तो वो ट्रांजेक्शन मेरा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। तो जो ये डीम्ड एक्सपोर्ट है या जो ये मर्चेंट एक्सपोर्ट है, क्या ये मेरा एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन है? आंसर इज नो, क्योंकि गुड्स के केस में फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए, पर यहां पे तो डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है? जो इंडिया में रिसिपिएंट है। मर्चेंट एक्सपोर्ट क्या है? जो इंडिया में रिसिपिएंट है। दीज आर नॉर्मल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, दीज आर नॉट दी एक्सपोर्ट। वर्ड एक्सपोर्ट ऐड किया हुआ है ताकि कुछ बेनिफिट दे सके उनको, ताकि कुछ बेनिफिट दे सके, क्योंकि वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट। तो बेनिफिट देना था, इसके लिए उनके नाम के पीछे एक्सपोर्ट है, बट इट डजंट मीन दैट दे आर द जीरो रेटेड सप्लाई एज डिफाइंड इन सेक्शन 16। एंड व्हाट हैपन इन दिस केस? इफ दे आर नॉट द जीरो रेटेड,
both will be reported in 3.1.a. ये तो हुआ मेरा प्रैक्टिकल, मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको अभी GSTR 3B कैसे आता है? मोस्टली ऑटो पॉपुलेट आता है, मोस्टली ऑटो पॉपुलेट आता है। अगर और GSTR 3B अगर मैं फाइल कर रहा हूं, उसके पहले मैंने 1 फाइल कर दिया होगा, डेफिनेटली 1 फाइल कर दिया होगा। नाउ डीम्ड एक्सपोर्ट GSTR 1 में टेबल 6C में दिखाता हूं, मर्चेंट एक्सपोर्ट टेबल 4B में दिखाता हूं, 4A में दिखाता हूं। These both are linked to 3.1.a under auto population. एक्सपोर्ट में कहां पे दिखाता हूं? 6A में दिखाता हूं। 6A are linked to 3.1.b. Coming to the next problem. Supplies made to SEZ unit, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सप्लाई मेड टू SEZ यूनिट, क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाईज है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर सप्लाई बाय SEZ यूनिट टू DTA, ये बताएं मुझे थोड़ा, अगर SEZ यूनिट है वो अगर डोमेस्टिक मतलब इंडिया में ही कोई सप्लाई कर रही है आउट ऑफ SEZ यूनिट, अगर गुड्स का ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा, और सर्विस का ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा? सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज क्लियर दैट इट इज नॉट द जीरो रेटेड सप्लाई, इट इज नॉट द जीरो रेटेड सप्लाई। व्हाई सो? Because zero rated supply means export or supply made to SEZ unit. DTA to SEZ, ये ट्रांजेक्शन मेरा जीरो रेटेड है। SEZ to DTA आ रहा है, ये ट्रांजेक्शन जीरो रेटेड नहीं है। अगर ये बात सर्विस की है, ये नॉर्मल B2B का ट्रांजेक्शन होगा या B2C का ट्रांजेक्शन होगा। और अगर ये गुड्स की है तो इन माई व्यू इट विल बी आउट ऑफ GST, not required to report the goods transaction, not required to report the goods transaction in the GSTR 3B. अगर SEZ यूनिट गुड्स की सप्लाई कर रहा है DTA को, SEZ यूनिट गुड्स की सप्लाई कर रहा है DTA को, तो ये ट्रांजैक्शन GST के बाहर चला जाएगा। रिसिपिएंट अपने इंपोर्ट ऑफ द गुड्स के अंदर बताएगा, और साथ में जब मैं 9C की बात करूंगा या कभी हम देखेंगे 9C, वहां पे एक रिकंसिलिएशन आइटम के रूप में रिपोर्ट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, इश्यू नंबर 6 एंड 7, बहुत प्यारा इश्यू है। एज्यूम कर लो मैं ट्रांसपोर्टर हूं और आप कस्टमर है मेरे, आपके इंस्ट्रक्शन पर मैंने माल पिक किया और मैंने माल आपको डिलीवर कर दिया, तो मैं सप्लायर हुआ और आप कौन हुए? कस्टमर हुए। अब मैं भी रजिस्टर्ड हूं और आप भी रजिस्टर्ड हैं, पर मैंने 12% रेट ऑप्ट नहीं की है। सो मीनिंग देयर बाय जितना भी मेरी वैल्यू ऑफ सर्विस है, आप रिसिपिएंट हैं और आप RC में पे करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन, चूंकि मैं रजिस्टर्ड हूं, तो मुझे भी तो अपना 3B और 1 फाइल करना होगा। यस, तो मेरा ट्रांजैक्शन कहां पे रिपोर्ट होगा और आपके लिए ये ट्रांजैक्शन कहां पे रिपोर्ट होगा? इश्यू 6 एंड इश्यू 7। सो प्लीज गिव मी द रिप्लाई फॉर इश्यू नंबर 6 ओनली। Please give me the reply for issue number 6 only. Arun, making the supply for transportation of goods to you and both are registered, और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स मैं नहीं पे करूंगा, आप पे करेंगे, तो मैं इस ट्रांजैक्शन को कहां पे रिपोर्ट करूंगा? ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, अरुण विल नॉट पे द टैक्स ना, अरुण विल नॉट पे द टैक्स। वेयर आई विल रिपोर्ट 3.1.a। यहां पे डाउट किस में आएगा? यहां पे प्रोबेबली डाउट इन दो फील्ड में आएगा, A 3.1.a वर्सेस 3.1.c। ये क्वेश्चन मेरा इसके रिगार्ड में है। श्योर, अरुण इज ए ट्रांसपोर्टर मेकिंग द सप्लाई टू यू, सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड इस ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स मैं नहीं पे करूंगा, यू विल पे द टैक्स अंडर RCM। बिकॉज आई एम रजिस्टर्ड, I have to file GSTR 3B. So where I will report this transaction? Sir, what is the solution for that? Currently
we all are reporting in 3.1.c. Suppose if you have the client like Arun, जिसका ट्रांजेक्शन आरसीए में रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है. सो आप क्या 3.1.a में बताते थे? नो सर, नॉट पॉसिबल. आप क्या बताते थे? नॉट पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल. व्हाई आई एम सेइंग सो? Because suppose I do not have any other transaction. Suppose I do not have any other transaction. If I'll put value say 1 lakh and correspondingly I will not put any taxes. Once I will click on the confirm, there would be the red error message. There would be the error message highlighted in the red color. What they are asking? They are asking it cannot be blank. It cannot be 0. That was the technical glitches. That was the practical problem of the portal. But if you see transaction by Arun to you is a taxable transaction. If it is a taxable transaction, it is not at all exempted. It is not exempted, sir. It is taxable. Had it be exempted, why you will pay the tax? Why you will pay the tax? You will be least bother about to pay the tax. Because if the transaction itself is exempted, whether tax will be paid by recipient? Answer is no. Underlying transaction has to be taxable. Point is, because of the practical problem, we all forced to report the same under 3.1.c, but this was not the correct reporting. Now, what happened? Now, when I'll file the GSTR1 before 3B, I'll file the GSTR1 and this transaction are reported in table 4B. The same are auto populated in 3.1.a with tax liability 0 and they are able to save. And in that case, we are able to save. Is it clear? Very, very, very good adjustment and clarification. Any doubt on this transaction? Issue number 6 and 7 was very, very important. 7 is simple. 7 is simple because 7 is simple. What you will say, sir, it's RCM transaction. You will report in 3.1.d. Liability under RCM. Okay, fine. Issue number 8 and 9. Issue number 8. Okay, please explain again. Okay, that point now. Issue number 6 you are asking. Sunil ji, you are asking issue number 6 or 7? Fine. I'll repeat. Sir, issue number 6, it means we are filing the return of taxable person whose supplies are covered under RCM. He is not required to pay the tax. Earlier, we were forced to put the same in the 3.1.c because system are not allowing to enter the amount with 0 tax. That was the technical problem. So what we are doing in this field. But whether this transaction is exempted? Not at all. Whether this transaction is exempted? Not at all. We are reporting because system are not accepting. Just to put the figure anywhere so that we are adding. But now what is the changes in the portal? Before filing the 3B, you are filing the GSTR1. In the GSTR1, this transaction is covered in the table 4B. Table 4B. So in the table 4B, whatever the transaction you will enter, it will automatically come in the 3.1.a. For GTA, where to show these sales of the 3.11? Table 4B. Sir, table 4B. There is a specific table, table 4B. There is a checkbox. You had to click that checkbox. It means you are filing the table 4B. Rajesh Kumar ji, Amit Singh ji, Mohit ji, and Sunil ji, please confirm. Is it okay? Clear? Point number 6. Rajesh Kumar ji, I'll repeat again. No problem. I'll repeat again. So
In A, then absolutely correct. Earlier we are reporting in this, but now the problem is resolved. We will report in 3.1.8. What would be tax? 0. 0. Currently it's auto populating. Sunil ji, earlier when we are entering this, they are not able to confirm, but now the amount is auto populating. Now the amount is auto populating in 3.1.8. What item is named as GSTR1 table 4B? We'll discuss, Radhika ji. We'll discuss in the GSTR1. We'll discuss in the GSTR1. Rajesh Kumar ji, it automatically comes 0. You are not required to enter any amount. नितेश जी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. IF का पार्ट मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूं. Currently focusing on the 3B. I would request to ask the question in the last. ठीक है, हम बात कर लेंगे. So now moving to the next problem. Yes, very interesting. Issue number 8, supply of the goods moved from India to UK. I have moved the goods from India to UK. Second transaction, supply of the goods directly purchased from USA and then moved to the UK. Correct. This is moving from India to UK and this is directly from USA to UK. Tell me issue number 8 where it will be reported and issue number 9 where it will be reported. Fully agree. Issue number 8 is a zero rated supply and will be reported in this particular. Fully agree. Appreciated. What about issue number 9? What about issue number 9? In this particular field or in this or in this or in this? Yes. Now almost all are okay. In the initial, I have discussed that there was a concept of schedule 3. What is the schedule 3? On the transaction on which I am not required to pay the tax. Why so? Because it is in the negative list. Activity or the transaction which are neither supply of the goods nor supply of service. It means no supply. There are total 8 para and para number 7 is talking about from non-taxable territory to non-taxable territory out of GST because of schedule 3. And we have discussed that schedule 3 will be added in the non-GST supply. So everyone is okay that issue number 9 will be reported in this point number E, para number E. Moving to the next. 3.1 should not be reported under table 8 of GST. Yes. Table 8. Same, Busra ji, same. Is it high seas sale or non-taxable to non-taxable territory, or goods are kept in the bonded warehouse and before filing the bill of entry, I have supplied. All the transactions are of schedule 3 and will be clubbed in the 3.1.8. Sir, I have not told you 3.1.c for table 4B. Sir, I have told you that transaction which are covered under RCM will be reported in 4B and in 3.1.A. दीपक जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ट्रांसपोर्टर की बात कर रहा हूं. ट्रांसपोर्टर इज ए रजिस्टर्ड पर्सन एंड इफ ही इज फाइलिंग द रिटर्न. अर्लियर हम लोग 3.1.c में बताते थे, बट अब क्या करना है, आपको टेबल 4B में बताना है और कॉरस्पॉन्डिंगली 3.1.a में बताना है. क्लियर? थोड़ा फास्ट कंफर्म कीजिए. 3.1.4 मैं लास्ट बार रिपीट कर देता हूं बिकॉज अदरवाइज टाइम शॉर्ट है, मैं GSTR1 टच भी नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, सो दैट विल बी रिपोर्टेड इन टेबल 4B एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम इन 3.1.8. अभय कुमार जी, अब तो सर 4A से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, RCM वाला भी. यस, दैट इज द पॉइंट आई एम रिपीटिंग टू एवरीवन. राजेश कुमार जी, इशू नंबर 8 it is export will be reported in 3.1.b. issue number 9
from non-taxable to non-taxable, it will be reported in point number E, para number E, 3.1.E. Import of the goods or import of the services, very problematic. Can you tell me that import of the goods, where it will be reported? Whether it will be reported in 3.1.D or not, my specific question, whether it will be reported in 3.1.D or not. What is 3.1.D? Let's move the slide. Whether import of the goods will be reported in 3.1.D or not. Answer is no. Absolutely. Whether import of service will be reported in this or not. Yes. In case of the import of the goods, why we are not reporting? Why we are not reporting? Sir, if I will report in this field now, I have to pay tax. If I will report in 3.1.D, I have to pay tax. But the import of the goods at the time of custom clearance, I have already paid the tax. At the time of custom duty, I have paid custom duty, I have paid social welfare cess, I have also paid IGST. Therefore, it will not be reported again. And this service and normal domestic transactions. Perfect, absolutely. Now, I'm asking the question 3.2, very specific question to all the participants. Supply which has been reported. What is the 3.2? What is the 3.2? Sir, this is the 3.2. That of the supply shown in 3.1.A, details of interstate made to unregistered need to be reported. It means supply which has been shown in 3.1.A, yes, supply which has been shown in 3.1.A, interstate unregistered or composite or UIN will be reported in 3.2. Please select a specific answer. Please select which point is correct. Do we need to report those transactions which are more than 2.5 lakhs? Whether we are disclosing 2 times, and if yes, are we paying the excess tax only interstate composition or all supplies? These are the 3 points which we should take care. The first point, do we need to report only those supply which are having the value more than 2.5 lakh? No. Sir, 2.5 more than or up to, this bifurcation was in GSTR 1 for table 5 and table 7, not in the 3B. So if it is interstate unregistered, we have to report even it is below or above. Point number 1. Whether we are disclosing the same sales 2 times, correct. You are reporting the same sales 2 times. Why? Because first we have already reported in 3.1.A. You are again reporting in 3.2. If you are saying I'm reporting 2 times, does it mean we are paying the excess tax? Answer is no. Why no? Because 3.2 does not have any impact on table 6. 3.2 does not have any impact on the table 6. Does not have any impact on the table 6. The table 6, which is the tax payable, tax liability table, is coming only from 3.1.A. Tax payable column is linked to 3.1.A to E, A, B, C, D, all the component of 3.1. Only interstate composition or all? Answer is whether it is interstate or whether it is composition or unregistered or UIN. We have to report only interstate transaction. We have to report only interstate transaction. Next question, sir, we are not reporting. Is there any problem? Answer is yes, there is problem. Government has issued one circular 81 on 18th Feb 2019 that you might be liable to pay the general penalty of rupees 25,000 under section 125. You may have to pay the penalty if you are not reporting.
Now moving to the ITC part. Let's close quickly. Sir, ITC is divided in 4 parts. ITC eligible, ITC reversal, ITC eligible, ITC reversal, net ITC or ineligible ITC. ITC available whether full or part, ITC reversed, table 4B, net ITC, this is the formula, we are not required to enter any amount, or ineligible only for the reporting purpose, does not have any link with the electronic credit ledger, does not have any impact in the electronic credit ledger. Coming to the 4A, ITC available. So some part are coming auto-populated and some part we need to manually enter, like import of the goods, import of services and domestic RCM. If I have imported the goods, I will take the ITC. If I have imported the service, I will take the ITC. If I have any other RCM, I will take the ITC. In this case, I have already paid the taxes at the time of custom clearance, but these two cases we are reporting in 3.1.D and we are taking the ITC here. Main question, sir, can we take the ITC in the previous month itself for which we are paying the tax right now? Assuming we are filing the December month GSTR 3B and whatever the tax liability was there, we are paying on 20th Jan. We are paying on 20th Jan. Can we take the ITC of same in December? 100% yes. No problem at all. You can take the ITC. Inward supply from IST, input service distributor, all other ITC, you will enter here. Again, we know that now it's appearing auto-populated. Import of the goods, will it auto-populated or manual? Auto-populated based on 2B. This point we all have to care that now IceGate website has also linked to the GSTR 3B. From the IceGate 2A 2B, the data are auto-populating in 2A 2B and based on that it is auto-populating in 4A1. Import of service not possible to link, therefore we need to manually enter. RCM, I can say for the RCM, I have made one slide. RCM, domestic RCM can be divided in 2 parts, either 9.3 or 9.4. 9.3 in which supplier can be registered or supplier can be unregistered. Both possible, correct? So if the supplier is registered, then no problem. This will auto-populate it because supplier will file the GSTR1. It will auto-populate it in my returns. No problem. But if 9.3 case where supplier is unregistered or 9.4 case where supplier will always unregistered, both I need to enter. Both I need to enter manually. There was one problem when we are entering manually. The box is converted into the red color. So whether I am doing something wrong? No, sir. You are doing correct. CBIC has issued the press release that there was a technical problem. Please ignore that. So whenever you enter the amount manually in 3.1.D, tax liability under RCM, or you will take the ITC in 4A3, when you enter the amount exceeding 10% or 5%, amount box is converted into the red. Please ignore. 9.4 is earlier it was 5,000 per day, but now from 1st April 2019 we all know that it's restricted to the real estate sector. What is the ITC reversal? ITC reversal 4B1 has as per the rule 42-43 or other reversal. Then ineligible net ITC is simple a formula, or ineligible ITC as per 17.5 or other ineligibility. Now like to ask one question. Suppose
I have purchased. Now I have purchased some material for which you have issued the tax invoice. Next month, I have returned the goods. So you have issued the credit note. What do you suggest? For the reversal of ITC, do I need to report net amount? Do I need to report net amount in this particular field? Or I will report actual amount and then reverse in 4B2 and then reversal in 4B2 here. What do you think? In next month, I have returned the goods. Should I report net amount or I have to report actual amount in 4A5 and then reversal in the 4B2? What do you think? Please note one thing. If you are reversing because of the credit note, amount will auto populate in this field. Supplier is registered. He will issue the credit note, and once he will enter the same in the GSTR1, it will be auto populated in my 4B2 field. Net ITC available, ineligible, it's for reporting purpose. As per section 17.5 or others. So here, as per 17.5 for others, it can be the two treatment. Now you need to understand this point. Either first I will take the ITC, then I will reverse the ITC. Net impact would be nil, and then also report in 4D1 or 2. There would be the one-way reporting. What would be the second way reporting? I will not report in 4A5. I will not report in 4B2. I will not report in net ITC. I will directly report in ineligible ITC. Both you can choose. But there was one clarification. If you are choosing this, then GSTR 9, table 7, amount will come. If you are choosing this, GSTR 9, table 7, 17.5, auto populate amount would be there, but you have to delete this amount. If you are choosing this method, this way, auto population would be there in the table 7, you can continue. But if you are choosing this way, auto population would be there because table 7 of the GSTR 9 is linked with this particular field. So there will be auto population, but you need to manually delete. Otherwise, it will reduce the actual liability. From my side, GSTR1 3B major portion is completed, and table 5 exempt nil rated non-GST inward supply I will report, and rest is completed. You can now, it's up onto you for asking any question with respect to any transaction of GSTR 3B. Now I will move to the GSTR1, but giving the 5 minutes for asking any question. राजेश कुमार जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो जब अपलोड होगा ना, एक बार आप देख लीजिएगा. अगर फिर भी प्रॉब्लम है, आप सुमित जी को रिक्वेस्ट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ड्यू टू द टाइम कांस्टेंट मुझे GSTR1 भी कवर करना है. सो मैं रिपीट नहीं करना चाहता. अगर कोई नई क्वेरी है, मैं डेफिनेटली टेक केयर कर लूंगा. No query? So ठीक है. Now I'm moving to the GSTR1. Taken credit in 3B in the last year but not utilized. How to correct? Erroneously taken the credit in 3B in the last year but not utilized. How to correct? Use the table 4B2, reverse the same and pay either by ITC or cash. It will automatically, and no requirement of the interest. Where to show ITC for restaurant? It is ineligible, right? You can directly report in 4D1 or 2. It will be 2, ineligible ITC others. Or you can choose, there were 2 ways which I have explained, that first 4A5, then reverse, then report in the ineligible part, or
you can directly ignore, you can ignore all the above and directly report the same in this particular 4D2 or 1. ITC for restaurant is not ineligible because of 4D2. It is not eligible, not ineligible because of 4D1. 17.5 talking about the food and beverages expenditure. Food and beverages expenditure, but there was first proviso. If I am having the same nature, I can take the ITC. So it is not blocked by 17.5. It is blocked because of the rate notification. So it will be in the 4D2, not in the 4D1. Fine. Moving to the GSTR1. Moving to the GSTR1. Sure, सुनील जी बताएं सर. अरुण जी सॉरी, मैं आपको बीच में फिर डिस्टर्ब कर रहा हूँ. कोई दिक्कत नहीं. सर एक मेरा स्टाफ भी साथ में बैठा हुआ, एक क्वेरी है हमारी. 7 बजे ले लें तो चलेगा, अगर आप अलाउ करें तो 7 बजे ले लें, चलेगा. हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं सर. So I can continue the GSTR1 and then any query I am okay to. Okay sir, okay. Thank you sir. Next point is the GSTR1. GSTR1 क्या है? Details of the outward supply. By this statement, I can say it will not have any transaction of inward supply. It will not have any transaction of inward supply except the self invoice number, except the invoice which we are making because of inward RCM as per the section 31 subsection 3 clause 2 clause F, we are making that we need to report. Apart from that, no transaction of the inward supply. Give me only 1 minute. I'm logging to the portal so that I can explain practically the GSTR1. Yes. Now, first I will explain how to file the PMT06. Go to the create challan. When you are going to the create challan, there are two options coming: monthly payment for quarterly return or any other payment. Because of the QRMP, if we are paying by 25th, you have to select. जैसे ही आप ये select करेंगे, automatically दो option आएगा. Either fix sum method, नाम 35% आ रहा है, but it doesn't mean always 35%. It will be 35 or 100. नाम fix sum method का इन्होंने 35% चलान रखा है, so that we can correlate. But actually it is fix sum method or self assessment method. अगर आप ये click करेंगे and then proceed पे click करेंगे, you filing frequency is monthly for current period, hence you are not eligible. Because for this client I have already selected, for this client I have already selected monthly. तो monthly के केस में तो मुझे ये करना ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे 3B फाइल करना है और चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस. ठीक है, यू कैन व्यू द लेजर बैलेंस एज वेल. In the drop down, currently it's appearing January, in the next month January, February, likewise. Now moving to the GSTR1, moving to the GSTR1 return dashboard. So I will explain only the first table number, and then I have made one Excel sheet by which you can have the more clarity about the GSTR1. This is B2B transaction.
B2B transaction. In which 5 tables are there. 4A, 4B, 4C is irrelevant as of now, 6B and 6C. Quickly I am saying 4A means B2B transaction. 4B means B2B transaction where RCM is applicable. B2B transaction where RCM is applicable. So I was saying that if I am transporter and you are filing my return, then you will report the same in table 4B. 4C, it was for e-commerce operator. As of now, this functionality is not available. 6B, that is deemed, that is supply to SEZ unit, supply to SEZ unit. And 6C is deemed, 1 second. So sorry. 6B is supply to the SEZ unit and 6C is the deemed export. Correct? 6A is export transaction. Now, for GSTR1, I can say the GSTR1 is entirely divided in two parts. First part where invoice-wise detail I need to enter. Second part where I will enter consolidated information, not invoice-wise. Example, table 4, table 5, table 6, 9. These are come under the part detail. And consolidated like table 7, table 8, table 10, table 11, etc. So now you can see that this is the part 1, GSTR1 invoice detail, and go to the middle of the screen, GSTR1 other details. Now, table 4A, 4B, 4C clear. Now I'm clicking on this table so that I can explain practically. Click on the add detail. Like you are seeing that 6B, 6C, 4A, 4B. Is there any separate table? No, sir. It is clubbed all in one. However, there is separate checkbox is made. If you are filing table 4B information, it means you will tick on this option. Supply attracting the tax under reverse charge. It means outward supply of transporter, which will be taxable in the hand of the recipient. Supplier will not pay the tax. On the basis of this information, when you enter all the details by clicking on this checkbox, it will auto-populated in 3.1.A. And it will also auto-populated in the recipient 3.1.D plus 4A3. I hope you can correlate with me. You are able to understand these things. I am transporter. You are recipient. I have provided the service to you. I will file my GSTR1 by ticking supply attract RCM. Meaning thereby I will enter this information on which I am not required to pay the tax. First linking my 3B linked with 3.1.A. For recipient, it has two linking, 3.1.D so that he need to pay the tax, 4A3 so that he can take the ITC. Both are appearing in the same month. It is giving the reconfirmation. That I can take the ITC in the same month in which I am paying. Fine. Suppose it is a transaction of SEZ, table 6B. There is no separate table, sir. Once you enter the GSTIN number of the SEZ, this two pop-up will open. You have to select one, either with payment or without payment. If you made the supply to EOU or advance authorization or EPCG license, you will tick this checkbox. If you ticking this, system will understood that you are filing table 6C. If none of the box is clicked, it means you are filing table 4A. Once you will enter the GSTN number,
automatically in the bottom rate wise information will appear. Very important question and practical problem. Let me ask you, every participant, sir, here two problem are there. Question number 1, I am GTA. You are filing my return. You have ticked the above checkbox. You tell me where you will report this value, 0% or 5%. Where you will report either 0% or 5%. I'm expecting the reply from each participant. Mostly are replying 5%, but we observe that in the market some are filing 0%. What is the problem? What is the reason? So that ऐसा नहीं हो कि मुझे टैक्स पे करना पड़े. Even though I am sure that I have clicked on the table 4B, I have ticked that checkbox, but still I have the fear that if I will report against 5%, कहीं ऐसा ना हो जाए डिपार्टमेंट मुझे नोटिस शेयर कर दे, इशू कर दे कि GSTR 1 के अकॉर्डिंग 5% टैक्स देना है और आपने तो 3B में नील फाइल किया है. सॉल्यूशन इज, व्हाट इज द सॉल्यूशन? clarification which is coming as a message, I request to read this line. Total tax liability include the tax payable by the recipient on supply attracting reverse charge. However, the same will not the part of actual liability to be computed in filing of GSTR 3. It was earlier, now we can say it is 3B. What does it mean? It means while computing the tax liability, appearing the tax liability, it will include the amount which you reported under table 4B, but in the actual liability, it will not be added. So therefore, department will not issue any notice. Second point, quickly I can explain. Sir, I am into the real estate sector. Or suppose I have applying the rule 32 margin method. I'm applying the rule 32, or I'm to the real estate sector. My tax rate is 1.5%. Residential accommodation, REP, RREP, affordable, non-affordable. There are two rates, 1% or 5%. So suppose I made the sale one house at 1%. Will you report against 1.5% or will you report against 1%? Suppose my total value is 3 lakh. The value of the house is 3 lakh. I'm required to pay the tax 30,000. I'm required to pay the tax 30,000. How you will report this transaction? Either 3 lakh against 1% or should I report against 1.5%? If I'll report against 1.5%, I will report 2 lakhs. In both the cases, answer is same. But which method I should adopt? Yes, Deepak Kumar ji, it will come under 5%. What rate we should select? 5%, sir, because the recipient will pay the tax under 5%. Sir, I am into the real estate sector. I have sold the one house of 3 lakh rupees. Total tax is 30,000. You tell me how I need to report, whether 3 lakh against 1% or 2 lakh against 1.5%. Okay, I give the reply. This would be the right way. Sir, because the tax rate has not changed. It is the effective tax rate. How it comes? They are saying that total value is 3 lakhs, 1/3 deduction on account of the land. So net value would be 2 lakh. And 2 lakh you have to pay the 1.5% tax, 30,000. Therefore, you have to report against 1.5%. Table 4
table 4 completed. Now we are moving to the table 5, table 6. Rest of the table we are moving. First, outward supplies. If my transaction is B2C, there are two tables, table 5 or table 7. What is the table 5? B2C interstate plus large. Why I am adding the large? Here I will report the value exceeding 2.5 lakh. Rest all the B2C will form part in table 7. It means if it is interstate, I can say, because interstate large has already been covered in the table 5. Here it will cover B2C large, B2C small. So it means in case of the interstate up to 2.5 lakh, and in case of intra any value. Any value. Repeating again, sir, for B2C transaction, I have made the sale to unregistered. Where it will be reported, sir? There are two tables, table 5, table 7. In the table 5, if the transaction is in interstate plus invoice value exceeding 2.5, that will be captured in the table 5. What about the table 7? If it is inter, then up to 2.5 lakh, or if it is intra, any value. Perfect. Difference between the table 5 and table 7. So table 5, I have to give invoice wise information. Table 7, consolidated state wise and rate wise. Consolidate the value of entire state with rate wise. Entire value you can give at once. Now table 6, what is the exempt supply? It will always be reported in the table 8. Nil rated, exempted or non-GST. You have to bifurcate intra registered person, intra unregistered person, inter registered or inter unregistered. So by this I have completed my outward supply. Now we all know that if there is any error, how we can rectify? We are not having the right to revise the return. We can do the amendment. So therefore we have to use table 9. So I'm showing one Excel sheet that will be shared to all the participants in the Telegram group. So I request everyone to join the CASA Telegram group. So all the notes will be shared immediately after the class. Link has been given in the description box, chat box. Again, I have shared the link, requesting everyone to join the link. So PowerPoint presentation and that Excel sheet which I'm using will be shared immediately after the class. Recording will be, link will be shared. Shivani ji, link will be shared where you can watch the recording. Table 4A, 4B, 4C, 6B, 6C. For all these invoice information, there is an amendment table 9A registered. If any transaction of export problem is there, you can do the rectification 9A export. And for table 5, you can do the rectification through table 9A unregistered. There are 3 9A. One for yellow invoice table, second for export, and third for table 5. Now there are total 5 table wherein we are reporting outward supply. In the GSTR1, there are total 5 table wherein we are reporting outward supply. Table 4, table 5, table 6, table 7, table 8. So table 4, 5, 6, I have reported, I have discussed. Table 7, what is the amendment table? Table 10. Table 8, there is no amendment table. If information with respect to exempt supply has been reported incorrectly, information with respect to the exempt supply has been reported incorrectly, you cannot revise. In the next month, you can do plus minus if possible, and otherwise you can report correctly in the annual return. Now I'm talking about
9B and 9C. Registered and 9B debit credit note. 9B, there are two table of 9B. 9B for registered, 9B for unregistered. Try to link with the original tax invoice. Sir, originally tax invoice you have reported in this registered, so there would be the 9B registered. If you reported unregistered transaction either in the table 5 or table 6A, now please give the focus. Now I am saying that 6A transaction is also the B2C transaction for which I will report any debit or credit note in the table 9B. Now, sir, B2C table 7 was also there. Whether we need to report in this table, answer is no. For table 7, you need to report. For table 7, you need to report the net amount in the respective table. Let me show you table 7 and there is one message. मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं साइज में so that you can read. Kindly read. Taxable supplies net of debit and credit note, meaning thereby if B2C transaction is there which form part of the table 7, the debit note and credit note will be adjusted in the table 7 itself. It will not have any separate table for debit credit note for B2C unregistered reported in the table 7. Correct? Going back to the Excel sheet. So this part is completed. Now the only last table, that is table 11. The table 11, to understand the table 11, please focus on this box matrix. If I have received the advances on which I need to pay the tax, I will report in 11A1 and 2. I have received the advances on which I need to pay the tax. For example, in the month of January, you have paid the advance to me. And which advance is taxable? Is it goods or services or both? Can you quickly reply to me? Advance under the GST. As of now, in the current date, is it against service or is it against goods or all? कौन सा taxable है? Advance received against services, advance received against goods, or both are taxable? Thank you very much. Now only service part is taxable. If I receive the advance for goods, not taxable. From 13th October 2017 itself. Correct? Great. If I have received the advance, I will report in 11A1 and 2. If there is any error, then I will correct the same. There is an amendment table. Suppose in the month of January, I received the 1 lakh rupees. I have paid the taxes. In the month of February, I have issued the tax invoice. My transaction is completed. I have issued the tax invoice. The first part I have reported in table 4A, B2B transactions, because it is tax invoice. Now, there has to be some field where you can say, sir, it is my outward supply, but I have already paid the taxes. So there has to be some linking. Yes, table 11B, 1 and 2 is there to adjust the 11B, 1 and 2 is there to adjust the advances. Therefore, we can say the period in which you are issuing the tax invoice, but actually you are not required to pay the tax. Why so? Because in the previous periods, I have received the advances and tax already paid. You will report the same in 11B, 1 and 2. Any error? Rectification 11B. Going to the portal again. So this is for 11. You can see the 4 part. 11. 1 second. 11A1 and 2. Tax liability for advance received. 11A for any amendment. Adjustment of advances 11B, 1 and 2. And amendment of advances 11B. Last, HSN wise summary of the output supply and table 13 document issued. What is the document issued? Sir, all the type of the document, it is invoice for outward supply,
inward supply for unregistered person. This is the requirement of 31(3)(f). Basically, self invoice on RCM transaction. This is the only field where we are reporting the inward transaction document number. Receipt voucher, payment voucher, debit note, credit note, delivery challan, etc. Revised invoice, all the field will be there to enter the amount. From my side, the GSTR1 is completed. It's open for asking any question. CA Anant Kumar Geraji, where to show the sales made by restaurant through Zomato, B2C or any other place, and what will be the rate of the GST? 5% or higher rate? We are restaurant not taking ITC. Rate would be 5%. The problem is if we are making the outward supply through e-commerce operator, if it is B2B, ideally it should report it in 4C. If it is B2C, ideally it should be reported in 5B or 7B. Problem is 7A1 and 7B, 7A, 7B. Problem is currently there is a problem practical portal, problem at practical at GST portal. They are not accepting the transactions which are made through e-commerce operator. So it will be normally shown as B2B or B2C, whatever. इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में भी डॉक्यूमेंट इशू करना होता है ना सर? राजेश कुमार जी, टू द एक्सटेंट ऑफ माय नॉलेज, जो 31(3)(f है, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F है, वो सिर्फ 9394 आरसीएम की बात करता है, मतलब डोमेस्टिक आरसीएम की बात करता है, सेक्शन 93 और सेक्शन 94 ऑफ द CGST एक्ट. सो changing my view, sir, one second, changing my view, because if I'm looking the domestic transaction, I have to refer the section of the CGST Act. But when I'm looking the import transaction, I have to refer the section 5.3 or 5.4 of IGST Act. So in my view, yes, you are correct. We have to issue the self invoice. Supplied Nitesh Shahu ji, if IFF not file for Jan 21, then how to file it? सर आप फरवरी में फाइल करना, डेट क्रॉस्ड, या अभी आप फाइल कर दीजिए जनवरी मंथ का जाके. आई थिंक इट वुड बी अलाउड. ऐसा नहीं कि पोर्टल बंद कर देगा. प्रॉब्लम क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन आप जनवरी का अब दिखाओगे IFF के थ्रू, रिसिपिएंट के 2B के नेक्स्ट मंथ में ऐड होगा ये ट्रांजेक्शन. अंजलि यादव जी और नितेश साहू जी, एक बार कंफर्म करें क्या पोर्टल अलाउ कर रहा है? मेरे हिसाब से पोर्टल अलाउ करना चाहिए, मेरे हिसाब से पोर्टल अलाउ करना चाहिए. एंड इफ इट इज नॉट अलाउइंग, देन नो प्रॉब्लम, इट विल बी एडेड इन द नेक्स्ट IFF फरवरी. फाइन, नो प्रॉब्लम. अगर IFF अलाउ नहीं कर रहा है, बिकॉज वी ऑल आर बिजी इन द GST ऑडिट, so not have the sufficient time to go for the IFF for the time being. Correct. So next question, रस्तोगी जी, नहीं, एक सेकंड, काफी क्वेश्चन है, मैं वन बाय वन. राजेश कुमार जी, मैंने आंसर कर दिया. रोशन जी, इज इट मैंडेटरी टू शो द क्रेडिट नोट इशूड बाय द सप्लायर इन द GSTR1? नहीं, दैट वुड बी द इनवर्ड ट्रांजैक्शन ना. नहीं, if I am a supplier and I have issued the credit note, then it will be reported in GSTR1, otherwise not. It is not for inward transaction. आशा जी का क्वेश्चन है, सप्लाई टू द पर्सन होल्डिंग GST TDS रजिस्ट्रेशन टू बी फिल्ड एज B2B और B2C.
पॉइंट है B2C। सपोज मैं गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा हूँ जिसके पास रजिस्ट्रेशन तो है बट TDS कैटेगरी का है, अगर आप टेबल 4A में ऐड करोगे ना तो वो लेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज वहां पे नॉर्मल ट्रांजेक्शन, नॉर्मल रेगुलर कैटेगरी वाले रजिस्ट्रेशन नंबर को एक्सेप्ट करता है। इट विल बी रिपोर्टेड इन B2C। आर के रस्तोगे जी, एडवांस रिसीव्ड फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, नो बाइफर्केशन ऑफ द अमाउंट, जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस। बाइफर्केशन करना होगा, बाइफर्केशन करना होगा, अदरवाइज आप एंटायर अमाउंट पे 18% पे कीजिए। 2019 की B2C सेल्स रजिस्टर्ड पार्टी के जीएसटी पर अपडेट करना हो तो क्या करें? टाइम लिमिट चला गया सर, अब कुछ नहीं कर सकते। 2019 के ट्रांजैक्शन है, मैं सितंबर 20 तक करेक्शन कर सकता था। करेक्शन कैसे करता? B2C को B2B में कैसे करता? आई विल रिड्यूस द टेबल, आई विल यूज टेबल 10 टू रिड्यूस B2C ट्रांजैक्शन, आई विल इंक्रीज द टेबल B2B ट्रांजैक्शन बाय रिपोर्टिंग इन टेबल 4A। टेबल 18%, राजेश कुमार जी, बट अगेन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस 18% वाले में दिखाना है, करेक्ट। पोर्टल नोट मैंने बात कर दी, एडवांस रिसीव्ड रिप्लाइड, ओके फाइन। अंजलि यादव जी, जैन और फैब का ऐड करके फाइल कर देंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट। नो आइडिया सुनील जी। डॉक्यूमेंट इशूड ड्यूरिंग द मंथ, सो रोशन जी पूरा क्वेश्चन पूछिए। आई थिंक सर इन द डॉक्यूमेंट इशूड ड्यूरिंग द मंथ इन द GSTR1, एक बार वापस पूरा क्वेश्चन एक साथ पूछिए सो दैट आई कैन गिव द रिप्लाई। आनंद कुमार जी, we have shown advance receipt for the export of service in GSTR1, later we adjust through raising the export invoice, is it correct or not for advance receipt against the export of services? आपने 11A में दिखाया एक्सपोर्ट, उसके बाद में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस टेबल, बट आपको 11B भी यूज करना पड़ेगा। इज इट अगेंस्ट 11B भी यूज करना पड़ेगा, 11B 1 and 2, बट अगर इट इज अगेंस्ट LUT देन नो प्रॉब्लम, आई विल टेक मैक्सिमम 5 मिनट्स सर, आई विल टेक मैक्सिमम 5 मिनट्स, ठीक है सर। Just quick question, export of service 18% is B2B TDS GST, it is accepting in B2B TDS GST। मेरे हिसाब से पहले तो एक्सेप्ट नहीं करता था, अगर एक्सेप्ट कर रहा है then it will you can report B2B। earlier in my view it was not accepting, but अगर अभी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुका है, अभी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुका है, then you please add in the table B2B। so the last question I'm taking Nitesh ji and Nitesh Sahu ji, ठीक है, this is the last question। आउटपुट लाइबिलिटी 1.25, एलिजिबल इनपुट 1.10 एंड 2.5 लाख रुपए अवेलेबल क्रेडिट इन दिसंबर। आई एम सर कैलकुलेशन बैठेंगे सर, बाद में आराम से बैठेंगे। अर्लियर आल्सो बट नॉट क्लियर, एरोनियस टेकन ITC बट नॉट लेस, कैन बी रिवर्स इन 3B? यस यू कैन रिवर्स, इंटरेस्ट नॉट रिक्वायर्ड बट यू कैन रिवर्स। क्रेडिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, द डेबिट नोट इशूड बाय अस आर मैंडेटरी टू शो इन द GST? नो, रिसिपिएंट विल नॉट शो। सर आप कौन है? आप कस्टमर है कि सप्लायर है? अगर आप कस्टमर है तो आपको शो नहीं करना है, अगर आप कस्टमर है तो आपको शो नहीं करना है, अगर आप सप्लायर है तो यस यू विल रिपोर्ट इन द टेबल 9B। फाइन। सुनील जी मैं लास्ट में लूंगा, मेरे को मालूम है, मैं ओपन कर दूंगा सुनील जी, और लास्ट में आप बोल के मुझे अपनी क्वेरी बता सकते हैं। और भी कोई पार्टिसिपेंट है? बाकी 2 मिनट लास्ट, बट व्हेन वी टेली और क्विक पॉकेट इज सोन है 0%। राजेश कुमार जी मेरे हिसाब से सही नहीं है, लॉजिकली मेरे हिसाब से सही नहीं है, बट सॉफ्टवेयर की, because when I selected the drop down without payment of the tax, it will never create your tax liability. So which tax rate? It should be reported as actual tax rate. It is not the 0%, sir. It is not the 0%. Last question, Asa ji, in case of the bill issued to the taxable supply non-GST sales like MCA fees deposit is also added in that bill? अगर एक सिंगल बिल है, अगर एक सिंगल कंसोलिडेटेड बिल इश्यू किया, then you can report the same in the 0%। बिल एक सिंगल है, ठीक है ना, और अगर आपने सेपरेट किया तो टेबल 8 और रेस्पेक्टिव टेबल 4 या 5 या 6 या 7 जो भी है। सो फ्रॉम माय साइड सुमित जी इट्स अप नाउ ओवर टू यू, मेरी तरफ से सेशन कंप्लीट हो गया। सुनील जी को एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। सुनील जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, एक बार आप बताएं क्या प्रॉब्लम है। अरुण जी मेरा जो क्वेरी है वो रिगार्डिंग इनपुट, जैसे हमने 3B में इनपुट ले लिया, उसी महीने में पार्टी ने हमें क्रेडिट नोट दिया अगेंस्ट सेल, तो हमें वहां पे इनपुट भी छोड़ना होता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हम उसको नेट करके दिखाएं या ग्रॉस इनपुट लें और नीचे उसको रिवर्स दिखाएं, इनपुट ग्रॉस और रिवर्स, ग्रॉस और रिवर्स, ग्रॉस और, क्योंकि 9 में जाके फिर वो अफेक्ट करता है, क्योंकि 9 में वो नेट लेता है तो हमें ग्रॉस दिखाना चाहिए, नीचे रिवर्स करना चाहिए। एब्सोल्युटली ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी यस सुमित जी।
Very nice session, Arun bhai. Wonderfully covered. I request admin to unmute all so that if any query and कोई discussion अगर करना Yes, मैंने unmute कर दिया सर सभी को. हेलो सर. जी सर. सर जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मेरी जनवरी की टैक्स की लायबिलिटी जो है 1,25,000 है और जनवरी में मेरी एलिजिबल आईटीसी है 1,10,000 की. सो 20,000 का मेरा टैक्स की लायबिलिटी है. बट प्रीवियस दिसंबर के मेरे क्रेडिट लेजर में आईटीसी अवेलेबल है. सो न्यू पॉलिसी के हिसाब से मुझे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है. लास्ट मंथ दिसंबर की रिटर्न फाइल करते समय भी मैंने टैक्स पे नहीं किया था, मैंने आईटीसी से ही रिटर्न फाइल किया था. मेथड कौन सा चूज करें, फिक्स की सेल्फ? एफएस वो सेल वो बाय डिफॉल्ट हो गया था. नहीं, अभी जो पेमेंट करोगे आप कौन सा मेथड चूज करोगे? फिक्स में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और सेल्फ में भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों केस में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है टैक्स पे करने की. सो मुझे जनवरी में टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. करेक्ट, आपके पास सफिशिएंट आईटीसी अवेलेबल है, राइट? ये राइट. भले वो प्रीवियस दिसंबर तक का हो, लेकिन है. यस. नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स इन एनी ऑफ द मेथड, आइदर फिक्स और सेल्फ असेसमेंट. एंड अभी जो आईएफएफ के लिए अभी पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा है रिटर्न फाइल करने के लिए, तो जनवरी और फरवरी का दोनों एक साथ फाइल कर सकते हैं हम? जी सर. ओके सर, बट एक बार चेक करना पड़ेगा बिकॉज इट्स न्यू फॉर ऑल, तो वी हैव टू चेक व्हाट द रेस्ट्रिक्शन इज क्रिएटेड बाय द पोर्टल. ओके. नेक्स्ट प्लीज. एनी अदर वांट क्वेरी तो अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, हमने सभी को अलाउ कर दिया है. एंड काइंडली रिक्वेस्ट टू योर अनम्यूट एंड ऑन द वीडियो. And wonderful covered, Arun ji, and feedback from Shruti ji and other participant. Thank you sir. And I hope ki all 4 days will be very fruitful, as like day 1 we have learned so many things. Shivani ji, nice session. Asha ji, thanks. अरुण जी, जी क्वेश्चन सर. पूछ सकते हैं? हाँ प्लीज. सर मेरा क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको रेज किया था, एक्सपोर्ट के केस में मेरे पास एडवांसेस आए थे. मेरे पास 20 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली एडवांसेस आए थे और मैंने एलयूटी के अगेंस्ट उसको एडवांस में दिखा दिया. लेटर ऑन उसमें से मेरे पास 18 लाख रुपए के इनवॉइसेस बने और 2 लाख रुपए मेरे को सर्विस ना करने के कारण उसको रिफंड करना पड़ा मेरे को. तो मेरा क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट अगेंस्ट एलयूटी जो होता है उसका एडवांस मेरे को एडवांस के कॉलम में दिखाना है या रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज एडवांस जिसके ऊपर टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है, आई कैन इग्नोर द टेबल 11A एंड 11B. क्योंकि हमारे को इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि एक्सपोर्ट का एडवांस नहीं दिखाना होता. डिपार्टमेंट से हमारे को एक डिमांड बन के आ गई है कि ये आपने जो है टैक्सेबल वाले कॉलम में दिखाया है, इसके 20 लाख रुपीस के ऊपर आप टैक्स पे करिए. आप एलयूटी दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम. एलयूटी पहले फाइल की हुई है ना? तो एलयूटी पहले फाइल की हुई है सारी की सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. और उसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी हो चुकी है सारी की सारी उनकी. कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं. थैंक यू सर. Thank you, Anand. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you. And I hope no other query. So today's session is completing. And thank you, Arun ji, for your wonderful discussion. And all the participants. I hope मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर दिया है. आप लोगों को कोई इशू हो, कोई सजेशन हो, we are always ready to discuss. And with this note, thank you Rajesh ji, thank you Sunil ji, and thank you to all participants who took thank you. participation. ओके सर, मैं एक्टिवेट कर रहा हूं सर. जी sure. ठीक है. Thank you Usra ji.